college, I analyzed past year papers. That was my beginning point for my second attempt. And I saw that there's a pattern to certain questions. Questions are not asked ऊपर वाले level पे. अगर newspaper में आया है चंद्रयान अभी launch हुआ है, the question will not be on Chandrayaan. They will go 1 or 2 levels deep. This is something I realized. So while reading newspapers, I used to research. I used to make my own notes. Those notes were divided again proper syllabus wise. So that helped me in mains as well. But I used to go deeper. For example, I knew Huawei was in news. So 5G was important. So when I made my notes, I made notes 1G से लेकर 5G तक. All the technologies जो उसमें है, volt है, LTE है, all of that, because I identified that as a pattern from UPSC's past years papers. And this time there was a question on 5G. So I think this is how I read my current affairs. That really helped me. And static तो जैसे सबका static होता है, very standard books, but I was very clear, एक book से ज़्यादा या एक source से ज़्यादा एक paper के लिए, एक subject के लिए I will not do. Because all the toppers used to say we limited our sources. And I think there's that fear of missing out when it comes to books. So सबको लगता है ये भी पढ़ लो यार, ये कैसे छोड़ सकते हैं? But I think it's at times smart work to not read multiple sources. So this was my knowledge bit. And for strategy, the first thing I did was I started sleeping on time. I made an effort to sleep on time. Because in my first attempt, I used to sleep at 6 in the morning, 5 in the morning. So my mind was used to working at 1 in the night. And not at 9 in the morning. All right. So these were small things that I identified. So I used to change my sleeping pattern right before my prelims. Then I practiced some 60-70 mocks. Okay. I was very good at mocks after that. इस हद तक कि कुछ नहीं आता तो भी I will make a guesswork. And I also I took my mocks very seriously. So for me, mocks were not just about getting that one extra question. It was about me finding my weaknesses while attempting the paper, and at the same time also making my own strategy. So when I entered the prelims, I knew 90 plus questions करना है. I knew guesswork इतना हद तक ठीक होता है. 20 गलत होंगे इतना होगा. I'll get 120. It's fine. So that's how it worked for me in prelims, and I did clear by a very good margin. So I think that is also important because you don't want to waste those 40 days in speculation. So that helped me. तो मतलब अगर देखा जाए तो second attempt जो आपकी थी उसमें एक basically you have given a 1 year preparation to it. Yes. एक full साल आपने दिया अपनी तैयारी को. Great. तो prelims के लिए कुछ resource you did mention कि आप limited resources थे, एक book से ज़्यादा नहीं for every subject. फिर भी if you could just mention what were the resources you used? Yeah, sure. For polity, Lakshmikant, I think that's the Bible. Then for modern Indian history, I refer to only Spectrum. And I think Spectrum gives sufficient information. Then for ancient and medieval history, I did Tamil Nadu's 11th class textbook. And for art and culture, Nitin Singhania. And for economics, I didn't refer to any book because I had economics in 12th. So those basics added with newspapers and economic survey. I read economic survey very thoroughly. That. Then for environment, I read Shankarai's books, and I used to watch Roman Saini sir's videos on an academy. So those 18 videos were my source. And for science and tech, it was current affairs mostly. So these were my broad sources, and I supplemented them with a lot of mock tests because mock tests also give you a lot of new information. True. So एक चीज़ that I want to ask you, since you mentioned notes also, so note making also is a very important part. और मैंने आप कि कहीं आंसर्स में भी पढ़ा है कि यू बिलीव कम्प्लीटली ऑन ऑनलाइन नोट्स, मेकिंग नोट्स ऑनलाइन, ऑफलाइन पे आप बिलीव नहीं करते. सो व्हाट वुड यू से, व्हाई शुड पीपल मे बी ट्राई मेकिंग नोट्स ऑनलाइन एंड कैसे कर सकते हैं वो? राइट. सो आई वाज लाइक अ ट्रेडिशनल स्टूडेंट. मैंने ऑफलाइन नोट्स से स्टार्ट किया. रजिस्टर भर कर ना रियलाइज यार इसमें तो कंट्रोल फाइंड भी नहीं हो सकता. एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी दैट हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट हियर बट स्मार्ट वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट. So with online note making, it took me a while to go to it, but there were certain advantages which I would like to share. First, you can really arrange your notes paper-wise, topic-wise, subtopic-wise. So it's like you're making पूरा अपना UPSC का notes at one place. There's no space crunch. You can add links, you can add diagrams. I had so many diagrams and other sources which used to explain it well so that जब भी मैं दोबारा वो पढ़ूँ source तो मुझे वहाँ पे जाने में दिक्कत ना हो. And then you can do control find, you can add to it, you can subtract. So it's a very convenient tool. And सबसे बड़ी बात, it takes less time to make notes.
सो अल्टीमेटली वही 24 आवर्स हैं जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है. एंड न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाने में, इफ यू मेक हैंड नोट्स, एटलीस्ट इट टेक्स 3 to 4 hours. फॉर मी इट वाज अ 2 to 3 hour थिंग. कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कुछ भी और. एंड द बेस्ट थिंग इज कहीं भी जा रहे हैं फ़ोन में, आई एम ट्रैवलिंग इन मेट्रो, आई ओपन माई नोट्स एंड आई रीड दैम. I'm going anywhere, even if when I was traveling to so many places, flight में बैठ के notes पढ़ लिए. So online notes are very organized. They are very, I think, smart, and they can be used at multiple times. So they really, I think, help. Great. So this is for all of you. अगर जैसे कि वैशाली ने कहा, hard work is very important for these exams, but also smart work is equally important, sometimes even more important. तो ऑनलाइन लर्निंग ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ इट्स बेनिफिट्स. तो अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस नहीं चेक किया है, देन देयर इज़ एन एड दैट्स गोइंग टू प्ले राइट नाउ अबाउट द अनअकैडमी प्लस. गो चेक द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया. एंड अगर आप हमारे एक व्यूअर भी हो, यू कैन यूज़ द कोड CTWT, दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट. गो वॉच इट. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है. मैं हर टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करके एग्जाम्पल्स के साथ बहुत ही आसानी से समझाती हूँ ताकि आप बन सकें एग्जाम रेडी. आप मेरे कोर्सेज से सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ के स्कोर भी इम्प्रूव कर पाएंगे. With teaching experience of 4 years, I have gained the knowledge to confidently say that I am an expert in political science and international relations. I am आशना सिसोदिया और मैं यूपीएससी के लिए अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाती हूँ. ग्रेट. सो वैशाली, एक चीज़ जो अब मैं नेक्स्ट में आपसे पूछना चाहती हूँ कि नोट्स के बारे में आपने बताया, यू सेड अबाउट द ऑनलाइन नोट्स दैट यू यूज टू मेक. आपने हमें बताया अबाउट द रिसोर्सेज दैट यू यूज टू यूज़. टेल मी, लाइक एक चीज़ अगर आप हमें बता सको कि आपका टाइम टेबल कैसा रहता था. आपने कहा कि यू ट्राई टू चेंज योर स्लीपिंग पैटर्न. तो टाइम टेबल इफ़ यू कैन एक्सप्लेन कि कब उठते थे, कितने घंटे पढ़ते थे. कुछ लोग 8 बोलते हैं, कुछ 16 बोलते हैं. सो आप कितने घंटे पढ़ते थे और आप टाइम को कैसे डिवाइड करते थे फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स? So I study with a timer. That is my thing, and I think I heard it from Rohan Sandy sir only, if I remember correctly. Okay. And I used to have this app called Focus. Okay. And I used to have daily targets of 9 hours minimum, and 9 to 12 used to be my aim. And most part of the year, I used to wake up at 12 in the morning. Okay. That was my plan. Earlier, I used to read the newspaper पहले. But मुझे realize वो जितना पहले न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी उतना ज़्यादा उसमें टाइम लगाती थी. So I shifted newspaper reading to 2 in the night, ताकि 2 to 4 I'll have just 2 hours, नींद आ रही होगी, I'll फटाफट finish it. Okay. So I used to start at say 12 or 1 in the afternoon. Okay. And I used to study in 3 sessions of 3 hours each, so that I have sufficient breaks also. And 6 hours used to be whatever syllabus I wanted to read. It was more or less static पढ़ने के लिए 6 घंटे. And 3 hours used to be everyday current affairs, which included my newspaper reading, note making, and also daily quiz कहीं पे देख लिया 10 मतलब for you to get more practice. And as in when prelims approached, so I shifted the cycle to my morning cycle. I used to wake up at 8 in the morning. Okay. I used to attempt one paper from 9:30 to 11:30 in the morning every day. Because I wanted that pura proper that environment where my mind is the most active at 9:30 in the morning. Okay. It took me a month to get used to this. But then I used to start with my paper. 9:30 to 11:30 I used to do a paper of पंखा ऑफ, सब कुछ ऑफ में, बिकॉज एक्चुअल सेंटर पे गर्मी होगी, एसी नहीं होगा. सो वो पूरा प्रोसेस आई यूज्ड टू डू. देन आई यूज्ड टू रीड दैट पेपर एंड आई यूज्ड टू बी डन विद दैट पेपर बाय अराउंड से 1 or 2. सो आफ्टर लंच आई यूज्ड टू डू माय रिविजन्स ऑफ whatever subject I wanted to do. So that is how I more or less divided my timetable. That was my timetable. Okay. सो वैशाली, अभी आपने अपना टाइम टेबल तो हमें समझा दिया. यू ऑल्सो मैंशनड कि स्टैटिक को जो आप टाइम देते थे, इस पे ही आई जस्ट रिमेंबर्ड अ क्वेश्चन जो हमारे एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि NCERT, सभी टॉपर्स बोलते हैं NCERT पढ़ना पड़ता है, NCERT पढ़ा था हमने. सो हाउ डज समवन गेट अबाउट रीडिंग द NCERT एंड लर्निंग फ्रॉम इट? बिकॉज बहुत सारे हमारे एकदम बिगिनर्स होते हैं जिनको समझ ही नहीं आती इतने सारे बुक्स को मैं कंप्लीट कैसे करूँ. सो व्हाट वुड बी योर टिप? माई टिप वुड बी कि पहले आप ये देखो वेयर यू स्टैंड इन योर प्रेपरेशन. जैसे हर कोई बोलता है 6 to 12 की NCERT पढ़नी है. आई डिडंट रीड इट बिकॉज आई न्यू कि मेरा सोशल साइंस का बैकग्राउंड वॉज डिसेंट इनफ बिकॉज आई यूज्ड टू लव SST इन स्कूल. सो आई डिड 11th and 12th. बट कहीं किसी पेपर में अगर मुझे लगता था कि यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, देन आई यूज्ड टू गो टू क्लास 10 से. वहाँ पे भी दिक्कत हुई तो 9th में. बट आई डोंट थिंक 6 to 12th इज समथिंग दैट इज अ रूल. क्योंकि it takes a lot of time
एंड आपको 11th-12th भी उतना ही समझ में आएगा जितना नीचे, बट वही सेल्फ अवेयरनेस कि देखो वेयर यू स्टैंड. एंड NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज, विल नॉट डिनाई. आई थिंक जोग्राफी स्पेशली पूरा वहीं से होता है. सो NCERTs के लिए द बेस्ट थिंग इज दैट यू रीड इट एंड यू मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बिकॉज NCERTs आर in itself very small, but the sheer number इतना ज़्यादा हो जाता है when you're revising, it becomes difficult to revise. So I will say first see where you stand and accordingly read the number of NCERTs that you want to read, and then whichever NCERT you read, have very short notes ready so that it's easier to revise and you have minimum sources. In the end, you should not have more than one notebook or more than one book for revision right before prelims or for mains, otherwise revision becomes a daunting task. Great. तो चलिए एक चीज़ हमें बताइए, लाइक आई नो यू वर अ गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर अपने कॉलेज में, तो थोड़ा सा टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. क्या थे आपके स्कोर्स, इफ़ यू रिमेंबर योर परसेंटेज बैक इन 10-12 एंड योर बैचलर्स एज वेल? Right. So I've done my schooling from DPS Faridabad, and I was a 95.8%er in 10th, CBSE board, and I had 95% in 12th, again CBSE board. I was a commerce student. All right. Because 10th class तक decide हो गया था कि I'll do law. My parents are lawyers. I'd seen घर में इतना law का माहौल कि it really interested me. So I decided medical, non-medical में मन नहीं लग रहा है. Let's. Even your brother is now a lawyer, right? Yeah, my brother. We are a family of lawyers. So I जब तभी decide कर लिया था that I have to do law. So I took commerce so that I could साथ prepare for law entrances, because law entrance is again a big task. True. And so I gave my entrances in 2011. So मेरा CLAT में NUJS हो गया था and IELT में NLU Delhi. I chose Delhi because it was closer to home. Yes. Those are our considerations at times, right? Great. So it was a 5-year law school course then throughout, and it was an amazing experience. Great. So when did this entire thought of कि मुझे भी civil services join करना है, because you have a family around you, you see all lawyers, आप खुद भी lawyer ही बन गए थे. Yeah. So where did suddenly this thing come up कि I want to become a civil servant? I think it was there at the back of my head because my father really wanted me to go for civils, but मैंने उन्हें बोला कि देखो पापा आप चाहते हो, but आपके चाहने से मेरी पढ़ाई तो नहीं हो जाएगी. I need to be 100% sure that I want to go for this अगर मुझे इतना लंबा इसकी preparation करनी है तो. So 3rd year of law school तक I decided नहीं law करते हैं, देखते हैं. But I got my job in 4th year. फिर जो मेरे पास 1.5 साल था law school में, तब I did a lot of other activities जहाँ पे a realization started to come in that probably law is not your thing. कुछ और कर सकते हैं, बट बिकॉज मेरे पास जॉब थी, सो आई डिसाइडेड कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना इज इक्वली इंपॉर्टेंट. आई डोंट वांट कि मैं सिविल्स में चली जाऊँ फिर सोचूं कि व्हाट इफ लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया होता. सो आई वेंट फॉर माई लॉ फर्म. 4 or 5 months into it, रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट माई कॉलिंग, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू सी माई सेल्फ डूइंग इन द नेक्स्ट say 10, 15, 20 years. सो मैंने 6 महीने बाद अपनी जॉब छोड़ी. एंड उसका मेजर रीजंस कुछ ये थे कि जो लॉ स्कूल के कुछ एक्सपीरियंसेस थे. आई वाज वर्किंग विद IDIA. इट इज़ an NGO called Increasing Diversity by Increasing Access to Legal Education. वहाँ पे मैंने देखा कि there were certain students working under me, studying under me, and they were amazing. They were just too good. उनकी सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स ये थी कि वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे एंड उनको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम लिखना पड़ रहा था, एंड इट वाज अ टास्क फॉर देम. And that's when it hit me, they're such good people, they're such good students, but because of certain policy problems or certain other problems, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पहुँचना चाहिए. And then I thought, if at all I have to work anywhere, I would rather work at the grassroots level, and UPSC से better, there's no other option. Great. So after a lot of thinking, I left my job and I started my preparation. Great. So अभी क्योंकि obviously prelims हो गया, आपने हमें बताया भी where did that motivation come from. We come to the mains part, right? क्योंकि mains में बहुत कुछ है. पर उससे पहले I just want to touch on your optional, since आपका law था optional, and you being a lawyer, maybe it was the obvious choice जो आप लेते. फिर भी if you can just maybe share some tips with aspirants कि law as an optional कितना अच्छा है, how scoring can it be, and अगर कोई इसकी तैयारी करना चाहता है, then what would be the resources and tips for them? Right. Like you said, मैं lawyer हूँ तो थोड़ा natural choice हो जाती है to go for law. Despite the fact that law is not a very high scoring optional, so highest marks over around 300, जो बाकी optionals में 350 तक चले जाते हैं. But I still think law is a good optional, and why मैंने इसको choose किया कुछ reasons के लिए. पहला तो अगर आपने 5 साल law पढ़ा है या आपने 3 साल law पढ़ा है, you have that knowledge, you might as well make use of it.
आपको सिलेबस कवर करने में या क्वेश्चन समझने में बहुत कम टाइम लगेगा, एंड वो अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन देन पुट इन अदर पेपर्स. सो इट्स बिकॉज आई हैव स्टडीड इट, तो इट बिकम्स ईजी फॉर मी. दूसरा, लॉ ऑप्शनल बहुत टेक्निकल है. सो अगर आपने एक बार सिलेबस खत्म कर दिया है, जो आई एग्री ह्यूज है, बट अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, देन इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. देयर इज वेरी फ्यू चांसेस ऑफ यू गोइंग रॉन्ग. तो अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे ही. सो थोड़ा सा मैथ्स टाइप जैसे टेक्निकल हो जाता है. इट्स नॉट अ वेरी सोशल साइंस सब्जेक्ट. सो दैट हेल्प्स. एंड द थर्ड गुड थिंग इज दैट द सोर्सेज आर वेरी नाइसली अवेलेबल. यू विल नेवर फाइंड इश्यूज सोर्सेज के अवेलेबिलिटी में, क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लॉ में. वन प्रॉब्लम दैट देयर इज टेस्ट सीरीज उतनी ज़्यादा नहीं है, बट उसको कवर अप करने के लिए अगर हम पास्ट ईयर पेपर्स देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. सो पास्ट ईयर पेपर्स की मॉडल आंसर्स अगर बना लें, देन आई थिंक लॉ ऑप्शनल इज वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शनल्स, स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ अ लॉ बैकग्राउंड. एंड स्पेशली इट हेल्प्स इन द इंटरव्यू, बिकॉज अदरवाइज यू हैव टू प्रिपेयर टू डिफरेंट. कि अगर ये था तो क्यों करा, एंड देन आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर करो, कुछ और भी प्रिपेयर करो. बट अल्टीमेटली योर ऑप्शनल शुड बी समथिंग दैट यू लाइक टू रीड, समथिंग दैट यू कंफर्टेबल इन, क्योंकि 2 पेपर्स की पढ़ाई ज़बरदस्ती नहीं होगी. तो फिर भी कुछ रिसोर्सेज अगर आप मेंशन कर सको इसमें. लॉ के लिए यहाँ पे बहुत हाई फाई सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. वही आपको कैसे पता चलता है पास्ट ईयर पेपर्स देखकर. तो क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो हमारी कुछ बुक्स होती हैं जिनको हम दुक्कीज बुलाते हैं. एक्चुअली वो प्रॉपर बुक्स ही होती हैं, बट आई डोंट नो व्हाई दे कॉल दुक्की. बट ए.के. जैन और सिंगल्स बुक, सो मोस्ट सब्जेक्ट्स कैन बी डन फ्रॉम देयर. इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा और एडिशनल सोर्सेज कैन हेल्प, जैसे इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, बिकॉज इट्स मोर एनालिटिकल. तो वहाँ पे मैंने देयर इज अ बुक कॉल्ड वी.एन. शुक्ला, वो मैंने पढ़ी दुक्की के साथ. Similarly for IPC, I did Pillai, which is the famous book for IPC, दुक्की के साथ. So for some subjects, आप 2 से ज़्यादा sources पढ़ सकते हैं. बाकी जगह 1 source is more than enough, and very standard sources, because you have to prepare for the exam and not for say judicial entrance या कुछ और. Perfect. तो सिंस ऑप्शनल पे हमने टच किया, नाउ ऑब्वियसली विच इज़ द मेन स्टेज ओनली, GS वाइज आपकी स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं. हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड डू फॉर योर GS पेपर्स. सो लेट्स टेक इट ईच पेपर वाइज. तो GS 1 के लिए क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? GS 1 की स्ट्रैटेजी ये थी, एक तो उसको सबसे एंड में करना, बिकॉज GS 1 में मैक्सिमम है याद करने के लिए, एंड आपको अगर मैं हिस्ट्री पहले ही कर लूँगी तो भूल जाऊँगी. सो काफ़ी हद तक GS 1 की प्रेपरेशन वॉज प्रीलिम्स के साथ. आई डिड एन इंटीग्रेटेड स्टडी फॉर प्रीलिम्स एंड मेन्स फॉर GS 1. कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड सोसाइटी. दैट इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप आफ्टर प्रीलिम्स. सो उनके लिए अगेन सेम सोर्स, एक बुक पढ़ना. एंड सोसाइटी के लिए भी NCERTs हैं, बट सोसाइटी के लिए आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर करंट अफेयर्स. एंड फॉर जियोग्राफी ऑल्सो वही आपका जो प्रीलिम्स का चल रहा था. सो पेपर 1 आई विल सजेस्ट टू एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग कि आप अपना प्रीलिम्स के साथ इंटीग्रेटेड स्टडी करो. इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम. And paper 1 में there is a lot of scope for you to make diagrams, for you to make your paper more interesting. For instance, geography तो है ही diagrams का, but जैसे history भी है. So I'll give one example. Last year there was a question about how the 18th century polity in India was very fragmented. So you could have made a map, अलग-अलग, you can show Maratha यहाँ पे, Mysore यहाँ पे, Bengal यहाँ पे, and how there's a lot of infighting. So things like these can make history paper also very interesting, something that the examiner might find a bit boring. So this was my more or less strategy for paper 1. Okay. So मतलब पेपर को भी इंटरेस्टिंग दिखाना to the examiner. Yes. Great. GS 2 की क्या थी तैयारी? GS 2 I think क्योंकि I come from a law background, so मेरी strategy थोड़ी different थी. मेरा काफ़ी हद तक GS 2 का जो एक हाफ है वो मेरा लॉ ऑप्शनल प्रिपरेशन के साथ कवर हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स लक्ष्मीकांत ओनली, एंड इट्स मोर अबाउट द वे यू राइट आंसर्स इन GS 2 दैन रियली अबाउट वॉट यू रीड, क्योंकि वही पढ़ा है जो प्रीलिम्स में है. सो फॉर पॉलिटी वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं योर Lakshmikant. Then for governance and for topics such as vulnerable sections, social justice, I use online sources. And for example, for vulnerable sources, what I did was मैंने बैठ के आइडेंटिफाई करा कि कौन कौन से वनरेबल सोर्सेज हैं, वनरेबल ग्रुप्स हैं. एंड वनरेबल ग्रुप्स को वंस आई आइडेंटिफाई तो एक एक ग्रुप को आई प्रिपेयर्ड सेपरेटली. सो दैट इज़ प्रॉबली हाउ आप सिलेबस पढ़कर उसको बेस्ट तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग द ऑनलाइन सोर्सेज. सो दैट ऑनलाइन सोर्सेज हुआ. And for international relations, newspapers was my thing, and big picture debate. So paper 2 का preparation is बहुत ज़्यादा इधर उधर से. So basic sources, online sources, and big picture is what I followed. And I used to supplement my answers
with a lot of, say, article numbers, case laws, and even committee reports, because in paper 2, committee reports become important. True. So this was more or less for paper 2. और आपका law background made it Made it